I start in the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello listeners and dear students, I hope you are enjoying good health. Today's topic is vowel sound, short vowel A. Learn English with Qamar. Please subscribe my channel. So आजकल की जो वीडियोस हैं मैं वो ज़रा जल्दी इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर पीपीएससी के पेपर आ रहा है, एग्ज़ाम्स आ रहा है, तो मैंने एक वीडियो बनाई तो है, उसका आपको इंट्रोडक्शन तो दिया है और उसमें मशवरे भी दे दिए हैं, लेकिन चलें ये फोनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं फोनेटिक्स के जो लेक्चर हैं वो जल्दी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। इट्स वॉल चार्ट अगेन, दिस इज़ फ्रंट पार्ट ऑफ आवर टंग, this is central part of our tongue, and this is back part of our tongue. It is imaginary chart of our tongue, so it tells where sounds comes from. It is a route map of vowel sounds. Yeah, today we are going to study a sound, and the position of this sound is half open. It is a front vowel a, like in word bed एंड गेट, वो जैसे ई होता है बिल्कुल उसी तरह का ये सिंबल है। और पहले भी बताया ये सारे जो सिंबल हैं इनको कहते हैं IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। जी लिप्स पोजीशन देखते हैं। सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस लिप पोजीशन, इट्स फ्रंट पोजीशन ऑफ आवर लिप्स लाइक ई। सो यू कैन वॉच माई माउथ, माई लिप्स, ई, इट्स फ्रंट वॉल. So now look at this picture, it's front vowel and here is a symbol of a, it's a, it's like a short vowel. The speech organs position, the jaw is approximately half open, tip of the tongue is behind the bottom teeth. जो हमारी tip of tongue है वो पिछले दांतों के पीछे होगी। a, आप जब इस sound को produce करें so you can feel it, a. The sound is pronounced in the front of the mouth. ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये साउंड फ्रंट से प्रोड्यूस हो रहा है, a and a. Okay, look at these examples. In these words, E is producing a sound. Sensible, ran, beg, bent, gentle, generosity. और इन वर्ड्स में ई और ओ जो है दैट इज प्रोड्यूसिंग एस साउंड। लेपर्ड, जेपर्डी, इन वर्ड्स में ई और ए स्पेलिंग जो है वो एस साउंड दे रहे हैं, जैसे हेड, वेल्थ, मेजर, प्लेजर। इसको प्लेयर नहीं पढ़ना, इसको मैयर नहीं पढ़ना, ये होते हैं मेजर एंड प्लेजर। थ्रेड एंड लेदर, ई एंड आई, प्लेयर, लेसिस्टर, ये वो सिटी का नाम भी है इंग्लैंड का। फ्रेंड, ए और वाई जो है ये इसको बहुत से स्टूडेंट्स इसको सेज पढ़ते हैं, दैट इज सेज। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन अ एंड ए। ये हमने श्वा साउंड पढ़ लिया है, तो मैंने अपनी श्वा साउंड वाली वीडियो में बिल्कुल ये कहा था कि ये एक ऐसा साउंड है कि अगर आप इसको समझ लें तो हाफ ऑफ द प्रोनाउंसिएशन कुड बी अंडरस्टूड। ओके, अब इन पे आपने गौर करना है कि ये पे जो यहाँ पे जो अ साउंड है उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है और ए का क्या डिफरेंस है। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा, आप इसको आराम से रिवाइज भी कर सकते हैं। खनाल, कनाल नहीं पढ़ना इसको, खनाल, इसको अब पढ़ना है खैनल। अब यहाँ पे जो ई है वो एस साउंड दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ए है वो अ साउंड दे रहा है, खनाल। करेक्ट, अ साउंड दे रहा है और ये शॉर्ट वॉल है, खा नहीं कहना, खो नहीं कहना, करेक्ट। केप्ट, गजट, गेल्ड, पुलिस, फेंस, सपोर्ट, सेल्फ हेल्प, कमांड, कैचअप, अमेरिकन। अब ए देखें बोल्ड है, यहाँ पे जितने भी ये लेटर बोल्ड किए हुए हैं ये शॉर्ट वॉल अ प्रोड्यूस कर रहे हैं। एम्बेसी, सो यू कैन अगेन रिवाइज these words and you could easily understand the difference between a and a. Now it's very easy. Examples in sentences. The sound is a. The bold words are important.
It's best for your pet's health to rest, said an educated vet to a wealthy gentleman. Educated men have always measured every word they said. 27 Shepherd hesitated before entering the sheep pen. It's a real pleasure to rest on a nice leather sofa. A red leather jacket was well presented on the display. The weather was wet and windy when the men were mending the fence. So in this way you can again repeat, and you can read, and you can study, and you can make your pair groups, and you can revise. Thank you, dear students, for watching my channel. Please share my videos. Thank you very much. Allah Hafiz.